Pakistan, a country with a population of 182 million, 60 million of which are children. Of those 60 million, 25 million are currently out of school, a number second only to Nigeria. That's over 1/3 of the population. The educational crisis in Pakistan isn't caused by a lack of funds, but rather by the fact that the government has moved those funds elsewhere and forsaken public schooling. People are left with little other choice than to send their children to expensive private schools. Due to the stifling expenses, most people cannot afford to educate their children privately. So what are the parents and their children who can't afford private education left to do? Some are forced into the workforce in order to support their families, while others struggle to find their own means of education. However, there are charitable organizations working to eradicate illiteracy by providing education to underprivileged children. One such organization is the Citizens Foundation, known in short as TCF. On our informational journey, we visited one of their primary schools near Silanwali in the Punjab province. Here we are at the TCF school, Fatima Ghulam campus, which serves as a primary school for underprivileged children in a small village known as Chak 130. The school itself is beautiful and very well equipped with books and computers. It overlooks the salt mountains and citrus fields, and is full of studious, respectful, and playful children. To find out more about the TCF organization and the Fatima Ghulam campus, we interviewed its principal, Ms. Parveen. My name is Rukhsana Parveen. I belong to Silanwali. Education जो है वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा है. सिलांवली सेकेंडरी स्कूल था मेरा, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया. 2008 में ये सिंगल प्राइमरी स्कूल था. बहुत यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं था. ये लोग समझते थे कि शायद कोई फॉरेनर आके बैठ गए हैं जो यहाँ इस्लामियात तो पढ़ाएंगे ही नहीं. तो मुझे कम्युनिटी को फेस करना पड़ा. लेस प्रिविलेज लोग थे, देहातों की आबादी ज़्यादा है, पढ़े लिखे अफराद भी जो हैं वो समझ नहीं पाते थे. स्टार्ट में बड़ा प्रॉब्लम आया, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी स्ट्रगल जारी रखी. और यही लोग हैं आपके मेरे पास. अब डबल यूनिट है कैंपस, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में भी तीसरा स्कूल बन गया है. क्लास साइज़ है वो 30 से 33 स्टूडेंट एटलीस्ट 30, और ज़्यादा 33 से अबव हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट जो है एक कमरे में इतने ही स्टूडेंट्स का आता है. और ये तमाम स्कूल्स का एक ही 30 स्टूडेंट्स क्लास में. और रेशियो जो है वो 50-50%, 48 और 52 भी हो सकता है. यानी 52% बॉयज़ और 48% गर्ल्स अगर अवेल ना हो. अगर अवेल हैं तो 50% बॉयज़ और 50% ही गर्ल्स. Now that we know the basic information about the school, the more important question presents itself. What is the cause of the educational crisis in Pakistan? पाकिस्तान में एजुकेशन ऑलमोस्टली स्टार्ट से ही क्राइसिस रहा है उसका. सबसे पहले तो ये कि एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ मेकर हमारे होते हैं, वो पिछले सालों में देखा होगा कि पॉलिसी बनाने वाले तो बना लेते हैं, लेकिन पॉलिसी बन जाती है वो जस्ट एक बुक की हैसियत से उसमें आ जाती है. और उस पर जब पॉलिसी पे अमल दरामद होना शुरू होता है, या तो वो अमल होता ही नहीं. अगर अमल होना शुरू होता है तो इससे पहले कोई नई पॉलिसी जो है वो सामने आ जाती है. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ले लें कि वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन मतलब उनके पास पब्लिसिटी बहुत और एक बच्चा फीसिस इतनी हाईली हैं कि वो एक पेरेंट्स की दस्तरस से बाहर है. वो बच्चा पहले ही गेट पे आने से पहले ही रोक दिया जाता है कि यू आर ब्रांडेड, यू नॉट गेन एजुकेशन, क्योंकि आपके पास फ़ीस नहीं है. फ़ीस नहीं है तो हमारे स्कूल में एंट्री बंद है. तालीम पे आपका हक ही नहीं है. And that's the huge problem with the educational system in Pakistan. Although the Constitution of Pakistan specifically states that a free, public primary education will be provided to all, the quality, consistency, and availability of public schooling is unstable throughout the country. As Ms. Parveen stated, many children who are out of school can't attend due to the expense of private education. The overwhelming majority of children out of school are likely to be from below the middle class. Of the 25.2 million children currently out of school in Pakistan, 70% have never even stepped foot inside of a school. Of the 8 regions in Pakistan, there are only 2 in which the percentage of out-of-school children is below 40%.
After we visited the rural TCF school, we headed over to one of the most populated urban centers in the world, the city of Lahore. Lahore contains a population of over 11 million, with over 8,200 people per square kilometer. Contained within are sprawling brick markets, brand new steel skyscrapers, and red brick residential areas. Quite the conglomerate of modern infrastructure and aging tradition. The contrast between old and new in this rapidly modernizing city is extremely polarizing. Just 20 minutes from the urban center lie undeveloped villages lacking basic sanitation and healthcare necessities, a scene one would imagine to be in the middle of nowhere, not just 20 miles from a huge city. Accompanying this rapid shift from urban to rural is the crippling lack of education apparent all throughout Pakistan. Here, outside of Lahore, we are visiting another non-profit organization working to provide education where the government won't. This organization is known as HDF, or the Human Development Foundation. They have been operating since 1997, working to improve healthcare and education facilities in Pakistan. To learn more about HDF and its operations, we spoke to the HDF Lahore Regional Manager, Mr. Adnan Salim. First of all, I will introduce myself. My name is Adnan. First of all, मैं आपको लाहौर का थोड़ा सा बताऊंगा कि लाहौर के अंदर HDF ने 2003 में काम स्टार्ट किया और यहाँ पर बेसलाइन सर्वे करने के बाद लोगों की डिमांड्स के ऊपर एजुकेशन और हेल्थ के अंदर किया। एजुकेशन के अंदर हमने पहले नॉन फॉर्मल स्कूल्स बनाए और उस एज ग्रुप को एड्रेस किया जो किसी वजह से अपनी एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कर गए थे। उसमें हमारे पास वेल स्ट्रक्चर्ड पेरेंट टीचर एसोसिएशन मौजूद है। अगर कोई बच्चा पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो हमारे स्कूल में आता है तो पहले तो HDF जो है उसको ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें उसमें बुक्स हैं, फ़ी वेव हम कर देते हैं। अब रहा उस बच्चे की यूनिफॉर्म का मसला, तो जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है जो वीडियो के अंडर काम कर रही है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसको यूनिफॉर्म बनवा देते हैं साइलेंट। अगर वो नहीं बनवा पाते तो जो हमारा स्टाफ है, सबसे पहले टीचिंग स्टाफ एंड देन द रीजनल स्टाफ, वो उसमें उनको साइलेंटली फैसिलिटेट कर देता है कि ताकि उस बच्चे को किसी भी जगह पर ये फील ना हो कि मैं किसी से कमतर हूँ और वो प्रॉपरली ग्रो अप कर सके और ग्रो अप करने के बाद इस कंट्री का एक अच्छा सिटीज़न बन सके। अगर हम जस्ट एक रिव्यू लें अपनी क्लासेस का, जब हम बच्चों से पूछें तो शायद 50-60% स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो फ्यूचर के अंदर टीचर बनना चाहते हैं, बट इन पाकिस्तान आई थिंक सो कि उसको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती इस प्रोफेशन को जैसे दी जानी चाहिए। अगर उनके ऑनरेरियम को और उनके रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जाए तो आई डू बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त चेंज आ सकती है। In the end, what it comes down to is that every child deserves an education. Every child deserves the opportunities for success that an early education can provide, whether it be in Pakistan, India, China, Ethiopia, Brazil, or anywhere else in the world. Education is the only thing that will carry humanity forward with unity. If you want to help, there are organizations all around the world fighting to eradicate illiteracy. Your contribution to the cause is just an internet search away. Together we can educate the world. Humanity's future geniuses, visionaries, reformers, and leaders are out there right now, and we can make sure that they get where they need to be through education. Thank you.